Hi guys, let's start with our discussion. So we were discussing basically chapter 27 in last class. We discussed in great detail underwriting. So basically we are discussing risk management techniques. So अभी underwriting कल हमने काफी detail में करा, बहुत सारे questions करे. We will be continuing with our further discussion. तो next claim basically risk management technique is कि underwriting तो चलो अभी हमने एक discuss कर लिया. Another technique is claims management. So this ensures that claims accepted are actually made consistent with the assumptions made when we were designing the product, when we were pricing the product. So claims management team जो होती है, they are basically involved in the process of product development. So as to make sure कि जो हमने claims pricing के time पर assume करे हैं, वही claims actually में arise हो रहे हैं, ठीक है. Now अगर मैं income protection की अगर हम लोग बात करें कि अगर कोई claim आता है तो हम मेडिकल इन्वेस्टिगेशंस करते हैं एंड अगर बहुत बड़ा क्लेम आएगा तो इट शुड बी इन्वेस्टिगेटेड इंफॉर्मेशन एट द प्रपोजल फॉर्म नीड्स टू बी वेरीफाइड ताकि हम ये चेक कर सके कि क्लेम कोई फ्रॉडुलेंट तो नहीं है. जैसे कोई आईपी क्लेम आया, ठीक है, सो पॉलिसी होल्डर्स प्रैक्टिस मेडिकल प्रैक्टिशनर मे बी कॉन्टैक्टेड टू कंफर्म कि करंट इलनेस कोई तो नहीं, एक्चुअली में कोई प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन की वजह से हुई है. So in income protection insurance, it is necessary कि हम ये कहते हैं कि it is necessary to provide a benefit at a level such that the claimant has an incentive to return to work. So generally in many countries, insurers impose conditions in terms of limit on the amount of benefit that can be provided relative to salary at the time of disability. So if policyholders' regular employment income falls, there is an incentive to contact the insurer to review the level of cover and reduce the premium paid. ठीक है. एंड सिमिलरली वी हैव डिसेबिलिटी काउंसलिंग एज वेल. सो डिसेबिलिटी काउंसलिंग में क्या होता है कि बेसिकली एट द टाइम व्हेन अ क्लेम इज एक्सेप्टेड तो इंश्योरर्स यूज दिस डिसेबिलिटी काउंसलिंग सर्विसेज. दैट मींस दैट अ विजिट एट द होम ऑफ द पॉलिसी होल्डर एट द टाइम ऑफ कमेंसमेंट ऑफ क्लेम पेमेंट एक स्पेशल टीम जाती है and then this is welcomed by the claimant. They provide all sort of information and it can help to establish the severity of the illness और उनसे पूछते हैं अच्छा कब आप वापस आ रहे हो. So this is disability counseling. This is the part of your claims management. अगर हम पीएमआई प्रोडक्ट्स की बात करें तो उसमें क्या होता है, इंश्योरेंस कंपनी वांट्स टू कंफर्म कि जो ट्रीटमेंट है वो सही चल रहा है. वो सिर्फ डॉक्टर पे रिलाई नहीं करते क्योंकि वहां पे एक टाइप की इंफॉर्मेशन उनको मिलेगी. वो बहुत सारे सोर्सेज से चेक करते हैं कि अच्छा एज पर द डिजीज मेंशन इज द ट्रीटमेंट करेक्ट और नॉट. So claims can be authenticated against the conditions in the policies. A person can attempt to direct the patient into a service provider or a hospital that is best equipped to handle the treatment. So pre-authorization में basically क्या होता है, when a policyholder becomes aware of the need of claim, policyholder calls the insurer to advise it of the condition, they discuss the treatment and then they check whether it is covered under the policy or not. So pre-authorization actually gives the insurer more control over the claims process क्योंकि तब तक treatment start नहीं हुआ, they are just discussing it. So it may allow it to influence the choice of treatment provider and it can ensure that claimant is aware कि क्या उनको treatment मिलेगा, क्या cover होगा, क्या नहीं cover होगा. तो later में disputes के chances जो होते हैं वो कम हो जाते हैं. And pre-authorization of claims से better management information है, so it actually improves the accuracy of reserves है. So claims management proper करना, proper inspection करना, proper make sure करना कि आप benefits appropriate दे रहे हो, आप PMI में proper investigations कर रहे हो, आप pre-authorization के लिए incentives दे रहे हो, is a part of risk management technique only. Then we can have checks on basically policy and claims data. This is another way of managing your risk. So we need to make sure कि policy और claims data हमारा accurately recorded है because यही same information हम administration के लिए use करते हैं. इसी के basis पे हम future experience predict करते हैं, इसी के basis पे हम लोग experience analysis करते हैं, हम reserves रखते हैं. So auditing करना इनकी regular events पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. Auditing में there can be regular inspection by which data of the systems basically in which the data is stored, how the data is
reported in your paper, how the data is electronically maintained, कोई deviations आती हैं, कोई inconsistency है, कोई unusual features है, तो हम वो कैसे point out करते हैं, तो हम ये spot checks भी लगाते हैं. सॉफ्टवेयर में कैसा चल रहा है हमारा, कैसी डिटेल्स जा रही है उसमें पॉलिसी होल्डर की, किस टाइप का क्लेम डिटेल्स है, कैसे उसमें डिस्ट्रीब्यूशन डिटेल्स है, कोई इनवैलिड आइटम्स है तो वो पॉपअप कर देता है. फॉर एग्जांपल जेंडर फील्ड या तो एम होनी चाहिए या फिर एफ होनी चाहिए. अगर एंट्री एज 120 से ग्रेटर है तो ये सारी चीजें ऑटोमेटिकली सॉफ्टवेयर में एरर्स डिस्प्ले होनी चाहिए. कुछ कंपल्सरी फील्ड्स होनी चाहिए दैट आर मैंडेटरी टू इनपुट. फॉर एग्जांपल एज इज मैंडेटरी, जेंडर इज मैंडेटरी, बेनिफिट इज मैंडेटरी. Plus, you should give proper training to staff ताकि they are valuing the data, they are maintaining the accuracy of data, they are regularly checking the data, they are ensuring कि data is input in an efficient manner. प्लस अगर स्टाफ ट्रेंड होगा तो वी कैन परफॉर्म कंसिस्टेंसी चेक्स एज वेल कि प्रीमियम सम इंश्योर्ड के साथ कंसिस्टेंट आ रहा है या नहीं आ रहा. जो इस टाइम पे पॉलिसीज हैं, डेटा है, वो प्रीवियस ईयर से ऐसा तो नहीं है, बहुत ही ज्यादा डिफरेंट जा रही है, तो रिकंसिलेशन चेक्स भी स्टाफ परफॉर्म कर सकता है. Then we have product design. अब प्रोडक्ट डिजाइन हमने ऑलरेडी बहुत सारे चैप्टर्स में पढ़ा हुआ है पहले भी. सो बेसिकली प्रोडक्ट डिजाइनिंग का मतलब है यू आर सेटिंग योर टर्म्स एंड कंडीशंस इन क्लियर वर्डिंग so that they are consistent with pricing conditions. Like आप पहले ही फॉर्म ऑफ बेनिफिट्स एक्सप्लेन करके चलो कि जैसे LTCI कॉन्ट्रैक्ट है तो कैश बेनिफिट्स मिलेंगे या इंडेमनिटी बेस्ड बेनिफिट है. क्लेम डेफिनेशंस पहले से ही क्लियर करके चलो कि ये ऑक्यूपेशन क्लेम डेटा है. गारंटीज ऑप्शंस जो हम इंक्लूड कर रहे हैं डिटेल में पहले से आप मेंशन करके चलो. जो भी एक्सक्लूजन्स हम दे रहे हैं उसके डिटेल टर्म्स एंड कंडीशंस पहले से ही मैनेज करके चलो. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर प्रोडक्ट डिजाइनिंग हम अच्छे से करेंगे, सब कुछ पहले से ही पॉइंट आउट करेंगे, लेवल ऑफ बेनिफिट्स, डेफिनेशन ऑफ बेनिफिट्स, आर बी इंक्लूडिंग गारंटीज और ऑप्शंस और नॉट, टर्म्स एंड कंडीशंस, जो एक्सक्लूजन्स है, तो इट विल हेल्प टू रिड्यूस डिस्प्यूट्स. Then another way to basically manage the risk can be managing your distribution process and customer relationship. नाउ सेल्स पर्सन जो हम एम्प्लॉय करते हैं या फिर जो हम इंडिपेंडेंट हायर करते हैं, सेल्स चैनल, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, वो सबसे पहला कॉन्टैक्ट होता है बिटवीन इंश्योरर एंड द कस्टमर. सो कस्टमर सेटिस्फेक्शन एक्चुअली रिलाइज अपॉन कि प्रोडक्ट्स किस टाइप का उनको हम लोग सेल कर रहे हैं. तो सेल्स पर्सन एट टाइम्स कैन बी वेरी अग्रेसिव एज वेल जस्ट टू बूस्ट देयर कमीशन एंड दिस कैन एंडेंजर द क्लाइंट रिलेशनशिप विद द कस्टमर्स. So insurer has to monitor the sales message. Insurer should be aware of business running. Insurer should analyze the quality of sales staff. They should be aware of the commissions that they are charging. They should monitor premium receipts कि ऐसा तो नहीं हो रहा कि sales लोग ही बहुत ज्यादा commission ले रहे हैं. They should invest in sales training. आप कैसे ये सब कुछ करेंगे? Basically the promises कि जैसे sales के टाइम पर ये promise हुआ, insurance company has to make sure कि promises should be consistent with the conditions which are there in your insurance contract. Your literature, your policy wording should be clear to support the product. Your sales should be customer friendly. It should be clear. You do not oversell. Plus, sales people should not be encouraging policy holders कि बस अभी ले लो and then you can lapse the policy with a view to take out other policy. And इससे क्या होगा? They will be having to incur second set of charges, initial charges जो लगते हैं. So products should offer value basically when measured against new business terms. आपको commission check करने का proper process होना चाहिए. Plus there should be balance between initial commission and ongoing commission. And we should just analyze our sales staff. Any complaints against the agents should be reviewed. And commission should be as per the sales effort. It should be commensurate with policy loadings. कि जितना बड़ा प्रीमियम होगा, बेसिकली जितना बड़ा सम एश्योर्ड होगा उतना आपका प्रीमियम कमीशन बढ़ता रहेगा. It should not introduce product bias. It should not introduce overselling. And we should monitor the premiums receipts. Basically, it should be whatever premiums that you are receiving from agents, you are brokers, it should be received in a timely manner. And आपको कभी भी पॉलिसी नहीं बेचनी चाहिए without evidence of premium receipt. They and these sales people should be adequately trained on the sales process. These sales people should be adequately trained in terms of कि हमें किस तरीके से कस्टमर की हेल्थ की इंफॉर्मेशन चाहिए, किस तरीके से उनको डिफरेंट प्रोडक्ट्स रेकमेंड करने हैं. प्लस वी शुड बी ट्रीटिंग कस्टमर्स आई मीन
ट्रीटिंग कस्टमर्स फेयरली को हमें बहुत ज्यादा ओबे करना है. सो हमें कस्टमर की एक्सपेक्टेशंस को ध्यान में रखना है. दैट में डिपेंड ऑन कॉम्पिटिटर रेट्स, बेनिफिट्स, कॉम्पिटिटर का प्रोसेस. इट मे ऑल्सो डिपेंड ऑन मोरल ऑब्लिगेशंस. इट मे डिपेंड ऑन द बेनिफिट्स दैट आर बीइंग पेड इन द पास्ट. So basically, there should be some cooling off periods allowed. There should be some reviewability conditions. We should provide customer support. We should provide some documentation, regular communication. ठीक है, तो ये treating customers fairly, managing customer expectations is also very important. एंड आपको रेगुलर टाइम टू टाइम अपना सेल्स प्रोसेस इंप्रूव करने के लिए ना कस्टमर सर्विस सेटिस्फेक्शन सर्वे जरूर करवाना चाहिए. Because this can serve the purpose of ensuring that policyholder satisfaction is there in the product as well as in the sales process as well. कि ऐसा तो नहीं है बस बेच दिया लेकिन पॉलिसी होल्डर इज नॉट सेटिस्फाइड विद द प्रोडक्ट. So you should check for the customer surveys also at regular time to time, ताकि हम उनसे उनकी कंडीशन से रिलेटेड हम रेगुलरली अपनी इंफॉर्मेशन लें और उसके रिलेटेड अगर हमें कोई प्रीमियम्स रिव्यू करने हैं, कुछ भी चेंजेस करने हैं, तो we can make sure that we are doing that. Then again, in order to manage your risk, we can have agreements with outsourcers basically. अब इसमें हम लोग क्या करेंगे कि हमने कहा हमने डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ अपना रिलेशनशिप अच्छा कर लिया, हमने कस्टमर्स के साथ अपना रिलेशनशिप अच्छा कर लिया, लेकिन अब हमें काउंटर पार्टी जो रिस्क कहते हैं हमें उनको भी अच्छे से मैनेज करना है. So we should exercise due diligence on the counterparty before selection. That means we should investigate the counterparty before we are signing off a contract. And then we can have restriction on the use of counterparties below a specified credit rating. कि अगर कोई minimum standards नहीं meet कर रहे हैं तो we should not select those counterparties. Plus there should be diversification across different counterparties that will help to reduce the risk of default, that will help to reduce poor performance by any particular counterparty. There should be limit on exposure to a particular counterparty. We can use credit insurance, credit derivatives, ये आपको पता है कि how we can use that. Plus we can have service level agreement. ये क्या होता है? एक legal contract होता है जिसको कहते हैं SLA, service level agreement. It basically contains details कि अच्छा आप अगर थर्ड पार्टी के साथ एंटर हुए हो तो what are the rules of the third party, कितना हम लोग पे कर रहे हैं, क्या हम लोग टास्क असाइन कर रहे हैं, किस टाइमलाइंस पे उनको वो टास्क कंप्लीट करने हैं, कितनी वो फीस चार्ज कर रहे हैं. सो एवरीथिंग इज रिटन इन दिस SLA. So time taken, and plus we make sure कि the targets are met in terms of time, the targets are met in terms of cases, कि अच्छा इतने cases आपने satisfy करने हैं, the targets are met in terms of customer satisfaction as well. सो ये हमने कहा हम क्या कर रहे हैं बेसिकली रिस्क मैनेजमेंट में. हमने कहा अच्छा अंडरराइटिंग अच्छी कर लो, हमने कहा क्लेम्स मैनेजमेंट अच्छा कर लो, फिर हमने कहा अपना डेटा मेक श्योर करो, फिर हमने कहा अपनी डिजाइनिंग अच्छी करो, फिर हमने कहा सेल्स पर्सन के साथ अच्छे रिलेशनशिप होने चाहिए. डिजाइनिंग का मतलब कस्टमर के साथ अच्छे रिलेशनशिप है. फिर हमने कहा कोई भी थर्ड पार्टी है उस पर लिमिट करो एक्सपोजर, क्रेडिट डेरिवेटिव्स यूज करो, उनके साथ रिलेशन आपके स्ट्रॉन्ग होने चाहिए. फिर अब हमारे इंटरनल प्रोसेसेस पे, इंटरनल प्रोसेसेस में एक तरीका सबसे अच्छा रिस्क मैनेजमेंट का जो अगर आप लोगों ने CP1 दिया एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट, कि आप एज अ होल यू आर कंसिडरिंग द रिस्क ऑफ द बिजनेस रादर देन कंसिडरिंग एनी इंडिविजुअल रिस्क. So this allows for diversifying effects of different risks. This allows that we are considering aggregate of the risk, so that we are considering any positive as well as negative correlations between different risks. So सबसे बड़ा role actually का is that there should be regular program advising the directors of the nature of risk phase, of the size of risk phase, so that they can analyze the nature, they can analyze the cost associated and can design on different management strategies. ठीक है, तो एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट ताकि हम लोग एक्सपेंस पे कंट्रोल कर सके, ताकि हम लोग पॉलिसी रिटेंशन का सोच सके, ताकि हम अपना एसेट लायबिलिटी अच्छे से मैनेज कर सके, ताकि हम कैपिटल अच्छे से मैनेज कर सके, ताकि हम अपना डेटा बेसिकली द बिग डेटा जो हमें आता है हेल्थ एंड केयर इंश्योरेंस कंपनीज के पास, वी आर एबल टू यूज दैट डेटा प्रॉपर्ली, वी आर एबल टू do some modeling techniques so as to make sure the data is not leaked out, because we have to make sure that privacy of data is maintained. Policyholder will not like to leak out the data, so whenever you are using data there can be restrictions on the use of data.
data, and there can be some errors as well in data. So data management, data usage is another way of maintaining your internal processes. तो आपने अपना internal process strong तो रखना ही है, जिसमें हमने बोला कि अच्छा एक्सपीरियंस आप अच्छे से चेक कर रहे हो, आप मॉनिटरिंग कर रहे हो, आप एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट कर रहे हो, प्लस आपको डेटा गवर्नेंस पे बहुत ध्यान रखना है बेसिकली. ये ना होना चाहिए कि आप रॉन्ग मॉडल्स यूज कर रहे हो, रॉन्ग एजम्पशंस यूज कर रहे हो, रॉन्ग पैरामीटर्स यूज कर रहे हो. और ये सबके लिए आपका स्टाफ जो होना चाहिए वो क्वालिटी स्टाफ होना चाहिए, प्रॉपर रिक्रूटमेंट प्रोसेस होना चाहिए, स्टाफ ट्रेनिंग शुड बी प्रॉपर, ताकि फ्रॉडुलेंट या इनकॉम्पिटेंट बिहेवियर ऑफ स्टाफ कैन बी हाईलाइटेड. क्लियर गाइस? सो ये अब डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं आएगा कि अच्छा डेटा चेक्स क्या लगाने हैं, या अच्छा हाउ कैन प्रोडक्ट डिजाइनिंग हेल्प इन मैनेजमेंट ऑफ रिस्क, हाउ कैन वी मेक श्योर दैट वी आर मैनेजिंग डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस और कस्टमर रिलेशनशिप, हाउ कैन वी मेक श्योर दैट वी आर मैनेजिंग अदर काउंटर पार्टीज, ये सब कुछ क्वेश्चन नहीं आएंगे. But these are the different ways of managing the risk, and now we will be discussing in different questions how exactly the question comes and how exactly you will be using this knowledge. So let's just note it down if you want to, and let's start with a questions discussion. So first question, a long-term health and care insurer that sells only critical illness policies has been losing business recently to its competitors. State ways in which insurer could remedy its competitive position. 5 marks. So there is a long-term health and care insurer, and they are selling only critical illness policies, and now they are losing business to its competitors. What are the different ways in which insurer could remedy its competitive position? 5 marks, 7 minutes time.
Guys, let's discuss. So, question is saying a long-term health and care insurer that sells only critical illness policies has been losing business to its competitors. State the ways in which insurer could remedy its competitive position. Business lose कर रहा है, सबसे बड़ा तरीका business को आपसे खींचने का premium rates बढ़ा दो, sorry कम कर दो. Reduce premium rates for new business. प्रीमियम रेट्स नहीं कम कर सकते. इंक्रीज द बेनिफिट्स फॉर न्यू बिजनेस, इंक्रीज द बेनिफिट अमाउंट या इंक्रीज द बेनिफिट एस्केलेशन रेट, और इंक्रीज द बेनिफिट in terms of increasing amount or increasing benefit escalation rate. हमने कहा प्रीमियम्स कम कर दो, बेनिफिट्स बढ़ा दो, या फिर options introduce कर दो. For example, you can give an option to renew the policy on non-guaranteed terms. Increase options. Example of option. We can say guarantee introduce कर दो. For example, guarantee in terms की premium will not increase beyond a certain percentage. So guarantees का कुछ point डाल सकते हो. You can increase your salaries to that you are paying to your sellers so that they are more incentivized to sell your business product. So increase salaries or commissions payable to sales people. डिस्ट्रीब्यूशन चैनल चेंज कर लो आप. अभी तक अगर आप डायरेक्ट सेलिंग कर रहे हो तो इंटरनेट के थ्रू सेलिंग कर लो. सो चेंज योर डिस्ट्रीब्यूशन चैनल. व्हाट एल्स वी कैन डू? स्ट्रिक्ट अंडरराइटिंग की जगह सिंपल अंडरराइटिंग कर दो. सो लेस स्ट्रिंजेंट क्राइटेरिया, आस्क लेस क्वेश्चंस. बहुत तरीके हैं हमारे पास. मतलब 6 मार्क्स के अगर ये 10 मार्क्स का भी होगा तो भी आप बहुत कुछ लिख सकते हो. छोटे छोटे पॉइंट्स बनाओ. what else we can do? Marketing कर दो, advertising करो अपने ब्रांड की so as to increase awareness for your product. और हम क्या कर सकते हैं? कोई वाउचर्स का इंसेंटिव्स दे दो न्यू कस्टमर्स को in order to increase sales. What else we can do? Policy terms and conditions favorable रख सकते हैं. So all this will help to basically get your competitive position back. Good question. So guys, note it down. Let's discuss next question. An insurance company is considering entry to the group risk market for a wide range of health and care contracts. First part कह रहा है describe how medical underwriters seek to manage risk for private medical insurance policy. 4 marks. Second part,
Describe sources of medical information typically used in underwriting such a private medical insurance policy. 2 marks. Total question 6 marks.
Let's discuss insurance companies considering entering to the group risk market for a wide range of health and care contracts. How medical underwriters seek to manage risk? Very easy. What's the benefit of medical underwriting? इस क्वेश्चन में कोई डाउट होने का ऑप्शन ही नहीं है, मतलब बेसिकली. So what is the advantage of doing medical underwriting? Can we say it protects insurance company from anti-selection? It protects insurance company from anti-selection. It helps to identify individuals जिनका substandard risk है, for which special terms have to be quoted. And for substandard risk, this medical underwriting process will identify the suitable approach, will identify the premium level for the special terms to be offered. It will help to ensure that all the risks basically are treated fairly, and morbidity experience is not different from that assumed in the pricing. So, Manan says, under PMI, usually pre-existing conditions are excluded. Hence, underwriting should help insurer identify if there are any pre-existing conditions with the policyholder. Insurer could ask questions about past medical history, or could as well check for the family history, could ask for some specific tests like blood tests to understand the current health of the policyholder. This way, medical underwriters would be in position to assess condition of policyholder better, thereby helping the insurer to assess the risk better and charge premium rates according to the risk. This would reduce the risk of future losses as given the premiums are charged appropriately. This also reduces the risk of anti-selection as this would deter policyholder. This would as help insurer to know appropriate margins. Reinsurer would be easier to get. So, Manan, well answered, but आपने थोड़ा सा special term, substandard risk, ये keywords missing है. एंटी सिलेक्शन आपने बोल दिया, आपको ये बताना है कि इससे हमें वो इंडिविजुअल्स आइडेंटिफाई होंगे जिनके जो सबस्टैंडर्ड रिस्क है, जिनके लिए हमें स्पेशल टर्म्स कोट करने हैं, फिर जिनके लिए हमें स्पेशल प्रीमियम निकालना है. दिस इज डन सो एज टू इंश्योर दैट रिस्क आर ट्रीटेड फेयरली. ये 3-4 पॉइंट्स होने ही चाहिए आंसर में. और मेडिकल एविडेंस कहाँ कहाँ से आ सकता है? क्वेश्चंस ऑन योर प्रपोजल फॉर्म, रिपोर्ट्स फ्रॉम डॉक्टर्स, मेडिकल एग्जामिनेशन कैरिड आउट बाय द ऑन द एप्लीकेंट, specialist medical tests on the applicant. So we have a lot of sources from where we can get this medical data. Okay, next question. We will be wrapping up chapter 27 today. Basically, risk management खत्म हो जाएगा. In a particular country, genetic tests have recently become available that can identify whether someone has a high propensity of developing certain kinds of cancer. Country's government has just made it illegal for any insurance company to make use of these test results when underwriting applicants for health insurance. So question is actually asking this only. Explain how this might affect insurance company and discuss the actions it might take in response to the ban. 7 marks.
So in a particular country, genetic tests have become available. So they can identify whether someone has a high propensity of developing certain kinds of cancer. Now government has made it illegal for any insurance company to make use of test results when doing underwriting. So question is asking, explain how this will affect insurance company and discuss the actions that might it take in response to the ban. 7 marks, start attempting.
We discussed similar question yesterday also. That was based on family history basically. This is about genetic test results. Almost similar points can be used. So in a particular country, genetic tests have recently become available that can identify whether someone has a high propensity of developing certain kinds of cancer. Country's government has just made it illegal for any insurance company to make use of these test results when underwriting applications for health insurance. Explain how this might affect insurance company and discuss the actions it might take in response to the ban. So सबसे पहले क्या होगा फैक्टर बैन? Increase risk of anti selection. Why? Because individuals who take genetic tests and find their test positive, they are more likely to seek CI insurance. So it will increase proportion of higher risk individuals applying for insurance. अब इनको बेसिकली स्टैंडर्ड टर्म्स में इंश्योरेंस इशू होगी, कोई एक्सक्लूजन्स नहीं होंगे, तो क्लेम एक्सपीरियंस विल एक्चुअली वर्सन, इट विल प्रोड्यूस लॉसेस फॉर द बिजनेस. नाउ व्हाट आर द एक्शंस दैट कंपनी कैन टेक? एक एक्शन क्या है? वी हैव टू सिंपली इंक्रीज द प्रीमियम रेट्स. या फिर हम एक काम और कर सकते हैं, जो जेनेटिक टेस्ट में डिजीजेस आइडेंटिफाई होते हैं वो डिजीजेस ही आप एक्सक्लूड कर दो कि हम इसमें ये नहीं कवर कर रहे, या फिर स्टॉप राइटिंग द बिजनेस, और कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास. तो या तो प्रीमियम रेट्स बढ़ा दो प्रॉफिटेबिलिटी मेक श्योर करने के लिए, बट इससे आप जो अच्छा सेगमेंट है वो आप लूज कर दोगे. दूसरा ऑप्शन आपके पास क्या है? बेसिकली एक्सक्लूड द डिजीजेस व्हिच आर नॉट इंक्लूडेड इन योर टेस्ट. एंड तीसरा ऑप्शन है सिंपली स्टॉप राइटिंग द बिजनेस. Clear guys? So with this basically we have completed discussion related to risk management. Now we will be commencing with the new chapters in next class. So okay then, that's it for the day from my side. Thank you.